In the third vessel, how much is going to be the milk then? How much is going to be the milk? 2 liter from here. Hey everyone, this is video number 4 in the series of mixture and alligation, and in this video I am going to be dealing with these kind of problems जो दिखते complicated है और actually होते भी complicated है, but अगर आप मेरे मेथड से इनको लगाएंगे तो 2 से 3 स्टेप जाते जाते आपका ये complicated problem simplified हो जाएंगे. So let us get started, and in this video I am going to be solving 2 varieties of problems. एक तो ये पहली वेराइटी ये रही जहां पे ये कहा जा रहा है कि A and B are two alloys of gold and copper prepared. So A और B alloy में गोल्ड और कॉपर देके रखा हुआ है, तो A और B में, so this is the first वेराइटी जहां पे क्या बोला जाएगा कि इन दोनों अलॉयस की सेम क्वांटिटीज को आप क्या कर दो, किसी थर्ड वेसल में डाल दो. थर्ड वेसल में डालने के बाद में वहां पे गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेराइटी. हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो ये रहा गोल्ड एंड कॉपर. सिमिलरली हियर यू हैव गॉट गोल्ड एंड कॉपर. Their ratios are obviously different. In the first one it is 7:2 and in the second one it is 7:11. You have learned in the ratio classes that this will be 7/9. Gold is going to be 7/9 of the total quantity of alloy A. ये 9 कहाँ से आया, 2/9, 7 plus 2. So this is 2/9 of the total. Similarly, gold in the alloy B is going to be 7/18 and copper is going to be this 11/18. अब प्रॉब्लम ये बोल रहा है यहां पे in the very first variety, if equal quantities of the alloys are melted, इनकी इक्वल क्वांटिटीज को आपको मिक्स करना है. अब वो इक्वल क्वांटिटी क्या ले कि हमारा काम चल जाए, यही है ना. rather than taking any वेरिएबल वी शुड बी टेकिंग अ फिक्स्ड वैल्यू. अब आप ये देख लो कि जो कुछ भी वो वैल्यू होगी वो 7 और 18 से आई टेक एनीथिंग x, सो आप क्या करोगे 7/9 इंटू एक्स. और अगर वो x जो होगा वो 9 से भी डिविजिबल होगा और वो 18 से भी ऑब्वियसली डिविजिबल होगा, बिकॉज आप यहां पे भी x लोगे और यहां पे भी x लोगे. तो आपको करना क्या चाहिए, आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए जो 7 और 9 दोनों से ही डिविजिबल हो. 9 and 18 दोनों से ही डिविजिबल. Why am I taking 9 and 18? 9 here and 18 here. And obviously 9 and 18 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा. आपको तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए. और अगर आपने ये लिख दिया कि भाई मैं 18 ग्राम तो लूंगा अलॉय A and 18 ग्राम you will take alloy B, right? Now how much is going to be the gold? 7/9 of 18 and copper is going to be how much? 2/9 of 18, है ना भाई. और ऐसा है तो 14 ग्राम is gold here and 4 ग्राम is copper here. आप इसको कैलकुलेशन करिए ना करिए, ये तो बड़ा सिंपल निकल के आएगा. यहाँ पे अलॉय B में गोल्ड is going to be 7 ग्राम and copper is going to be 11 ग्राम, है ना. कैलकुलेशन करेंगे तब भी यही आएगा. what is the calculation? 7/18 into 18. करो या ना करो बात तो बराबर है. and then you have formed alloy C. You have formed alloy C. Alloy C में obviously you will be having gold and copper. Gold 14 gram would come from alloy A and 7 gram would come from alloy B. So how much is gold in this alloy? 21 gram. And how much is going to be the copper? Copper is 4 from alloy A and 11 gram from alloy B. So 4 plus 11, this is how much? 15 gram. So you see 21 plus 15 is how much? 36 gram. 18 gram आपने लिया क्या? alloy A and 18 gram आपने लिया alloy B. In alloy C the total quantity is 18 gram. Total weight is 18 gram. Out of that 18 gram you have got 21 gram gold and 15 gram copper. And what is going to be the ratio? You simplify this. 21:15. 21:15 अगर आप लोगे तो कितना आएगा? 7:5. काम खत्म हो गया. That's the very first variety, right? अब ये मुश्किल तो था नहीं, प्रॉब्लम दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है. अगर आपने एलसीएम ले लिया तो आपका प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो गया. अगर आपने वेरिएबल ले लिया फिर तो प्रॉब्लम मुश्किल हो गया. अच्छा, now read this one. This is a very good problem to solve. It says that two vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 5:3 and 2:3. So you have got vessel A.
sorry. And then you have got vessel B. In vessel A, you have got milk and water. Similarly, in vessel B also you have got milk and water. The ratios are given to you as 5:3 and 2:3. देखो ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको ये सब तो करना पड़ेगा. So 5/8 of total is going to be the milk and 3/8 of the total is going to be the water, right? इसमें तो किसी को चैलेंज आएगा नहीं. 2/5 and 3/5. How am I getting 8 and 5 in the denominator? Now you understand this. Now this is not like the problem number 1. प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या हो रहा था, इनकी इक्वल क्वांटिटीज को मिलाया जा रहा था. अगर इनकी इक्वल क्वांटिटीज को मिला के वो ये बोल दे कि थर्ड वेसल में डाल दिया, थर्ड अलॉय बना दिया, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर आप निकाल दो तो प्रॉब्लम सिंपल है आपके लिए. आप क्या करते, 8 and 5 का एलसीएम लेते, 40. आप ये बोलते ये भी 40 और ये भी 40, और यहां से मिल्क एंड वाटर निकालते, थर्ड वेसल में पोर करते, वहां पे मिल्क एंड वाटर निकाल के आप अपना काम सिंप्लीफाई कर देते. यही करते ना आप. बट ये प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे. यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, when these mixtures are mixed to form a new mixture containing half milk and half water. वो ये कह रहा है कि जो थर्ड वेसल है ना भाई, वहां पे मिल्क एंड वाटर are going to be in 1:1 ratio. So in what ratio the content of A and B should be mixed? Now this is the second variety. Now how to deal with these kind of problems? It says that milk and water in the third one, are going to be in 1:1 ratio. What is the meaning of saying 1:1 ratio? Half should be the milk and half should be the water. So now equal proportion में तो मिलाएंगे, ऐसी गारंटी तो है नहीं कि half milk and half water निकल के आएगा. So what is that we should be doing here now? Now this problem is also simple, but you just have to be mindful कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है. Understand this. This is where I'm going to apply the alligation method, and I say that I have got content of A and B, and then I'm forming the mixture. Is that okay? And problem tells me, as of now I'm going to be focusing only upon the milk. Milk is how much over here? 5/8 in vessel A. So I'll write this one as 5/8. Okay. Milk in the second one is going to be what? 2/5. It is 2/5. So I wrote it as 2/5. Now in the mixture, milk is going to be the half. So I wrote this one as half. Now probably you understand that you have got vessel A and vessel B. In vessel A, milk is 5/8 of total. In vessel B, milk is 2/5 of total. And then you're mixing them in certain ratios. And then in the mixture, milk is half. Is that okay? यहीं पे आप एलिगेशन मेथड यूज कर लोगे और आपका आंसर आ गया. क्या सिर्फ मिल्क पे ही फोकस करना है? नहीं, ऐसा भी नहीं है. You can focus on the water also. We will do that. We'll make you convinced. So अब यहाँ पे क्या बना, ये एलिगेशन मेथड लगाएंगे. अब आपने क्या सीखा हुआ है कि यहाँ पे this value is bigger than one of these two and smaller than one of these two. आपने कैसे निकालना है कौन सा बिगर कौन सा स्मॉलर? Whenever you get confused, you need to watch that video of ration proportion, video number 4 of ration proportion. This is where I have done the entire calculation for you. कि कौन सा रेशियो बड़ा होना चाहिए, कौन सा रेशियो छोटा होना चाहिए, कैसे आप कंपैरिजन करोगे. से फॉर एग्जांपल मेरे को कंपेयर करना है कि 2/5 और 1/2 में कौन सा बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा. 2 into 2 5, 2 into 2 4 and 5 into 1 this is 5. Since 5 is bigger than 4, 1/2 is bigger than 2/5. एक तो ये. दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2/5 is 0.4 and 1/2 is 0.5. So 0.5 obviously is going to be bigger than 1/2. तो कैलकुलेशन से करना है, वैसे कर लो. जैसे मेरे को ये पता करना है कि 5/8 and 1/2 में कौन सा बड़ा है, तो मेरे को ना ये डेसिमल वैल्यूज पता है. 5/8 is 0.625 and 1/2 is 0.50. Obviously this will be bigger than this, but how do I check this? 2 into 5 it is 10 and 8 into 1 this is 8. Since 10 is bigger than 8, 5/8 is bigger than 1/2. Is that okay? So how do I find it out? I will say that now this is going to be half minus 2/5. Since half is bigger than 2/5, and what is that you should be writing here? वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, but then it is going to be very valuable lesson for you. So please be very patient with this. So now this is going to be how much? 5/8 minus 1/2. How did I write this? Probably you understand this.
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां पे ये वैल्यू निकल के आएगा, दिस इज गोइंग टू बी, this is 10, so this is going to be 5 minus 4 and this is going to be 8 and this is 10 minus 8. sorry, this is 8, so this is going to be 5 minus 4. So this value is 1 by 10 and this value over here is 1 by 8. And if you do the cross multiplication, how do you simplify this? 8 is to 10 and this is nothing but 4 is to 5. What is the interpretation of writing 4 is to 5? It means that vessel A, the content of vessel A and the content of vessel B, they should be mixed with 4 is to 5 ratio. Yani if you are taking 4 liter of 4 liter of vessel A, then you should be taking 5 liter of vessel B. इन दोनों को pour कर दो, half water half milk तो हो ही जाएगा. और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है यहां पे, और जैसे मैंने आपको ये बताया कि यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन द water also in order to find out this answer. How do I do that? You see, if I say that I have got vessel A, let me change the color of the pen. I have got vessel A and vessel B. How much is water in vessel A? The water over here is 3 by 8. And how much is water over here in the second one? This is 3 by 5. And how much is water in the mixture? This is 1 by 2. Please be patient. अगर आप पेशेंस के साथ में ना इस प्रॉब्लम को समझ गए, सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा. अगर आप थियोरेटिकली आप इस प्रॉब्लम को ढंग से समझ गए तो फिर इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होंगे वो सारे के सारे आप लगा लोगे. सो दिस इज व्हाट 3 by 8 and 3 by 5. हाउ डू यू डू दैट? आप बड़े वाले से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करोगे. नाउ यू नो द मेथड एज टू हाउ यू शुड बी डूइंग द कंपैरिजन. ओवर हियर 3 by 5 is bigger. 3 by 5 is bigger than 1 by 2 and then 1 by 2 is bigger than 3 by 8. इसको सिंप्लीफाई करके देखो. Are you getting the same answer here? Please do that for yourself. This is 10, this is 6 minus 5 and this is 8. So this is going to be 4 minus 3. So this is 1 by 10 is to 1 by 8. You do the cross multiplication, 8 by 10. If you simplify further, what ratio you are getting? 4 is to 5 again, isn't it? So इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बोला कि आप या तो वाटर पे फोकस कर दो या तो आप मिल्क पे फोकस कर दो. इन दोनों सिचुएशन में जो आपको आंसर निकल के आएगा वो हमेशा ही सेम मिल के आएगा. इज दैट ओके? बट कभी वाटर के साथ मिल्क को मत मिक्सचर कर देना. ये चीज आपने यहां पे ध्यान में रखनी है. सो दे आर द टू वेराइटीज दैट यू हैव अंडरस्टूड. नाउ आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आप पहले मेरे को ये बता दो कि ये वेराइटी 1 का प्रॉब्लम है या वेराइटी 2 का प्रॉब्लम है. 2 glasses of equal volume respectively are half and 3/4 filled with milk. They are then filled to brim by adding water. यानी equal volume को mix किया जा रहा है. Their contents are then poured into another vessel. Now understand, this is the variety 1. So I have got glass 1 and then glass 2 and I have got milk. How much is the milk here? Half milk. And how much is milk here? 3 by 4. So what is going to be the water? क्योंकि अब इसको पूरा का पूरा completely full भी करना है हमारे को. So water obviously is going to be half. And over here water is going to be 1/4 of the total. अब वो total होगा क्या? ये आपने सीख लिया पहले वाले क्वेश्चन पे. वो क्या लेना पड़ेगा हमारे को लेना पड़ेगा LCM of 2 and 4 which is nothing but 4. Did you understand this? तो मैं क्या बोलूंगा कि ग्लास 1 का भी वॉल्यूम है 4 लीटर एंड ग्लास 2 का भी वॉल्यूम कितना है 4 लीटर. तो अगर ऐसा हो गया तो हाफ इज व्हाट 2 लीटर इज गोइंग टू बी मिल्क एंड 2 लीटर इज गोइंग टू बी द वाटर. देखो आप कैसे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहे हो, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. सो ये हो गया 3 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर. यहां पे दोनों हो गए ना 4 लीटर एंड 4 लीटर. नाउ in the third vessel how much is going to be the milk then? How much is going to be the milk? 2 liter from here and 3 liter from here. Milk is going to be 5 liter, whereas water is going to be how much? 2 liter from here, 1 liter from here. This is going to be 3 liter. What is going to be the ratio of milk and water?
दैट इज 5:3। क्या ये प्रॉब्लम सिंपल नहीं है? इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई? प्रॉब्लम दिखने में बड़ा लग रहा है बट एक्चुअली प्रॉब्लम बड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं है ये बड़ा। सो यू हैव गॉट टू बी वेरी मच, यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये वेराइटी 1 है, वेराइटी 2 है। वेराइटी 1 है तो प्रॉब्लम सिंपल है, वेराइटी 2 है तो आप या तो मिल्क पे फोकस करोगे या तो वाटर पे फोकस करोगे, या दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस। नाउ रीड दिस प्रॉब्लम। It says that two alloys contain zinc and copper in the ratio of 2:1 and 4:1. In what ratio should these two alloys be mixed? Now this is variety 2, isn't it? In what ratio should these two alloys be added together to get a new alloy? And now in this new alloy, they will be telling you what is going to be the ratio of zinc and copper. तो अब आप क्या कर दो यहाँ पे, देखो मैंने आपको बोला जैसे पहले आप जिंक पे फोकस कर दो, जिंक पे फोकस किया तो आई हैव गॉट alloy 1, alloy 2, and then I would say this is mixture, right? And if that is the situation, what is quantity of zinc in the first one? This is going to be, sorry, this is going to be 2/3. 2/3 of total is zinc. Similarly, zinc out here is how much? 4/5. And how much is zinc over here? 3/4. सिंपल बनी ना बात भाई। अब यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आपको यही तो बताएगा ना कि आपने अलॉय 1 एंड अलॉय 2 को किस रेशियो में मिलाया हुआ है, काम आपका खत्म हो गया। और अगर ऐसा है तो व्हाट इज दैट यू गोना डू? दिस इज 4/5 minus 3/4 and this answer is going to be 3/4 minus 2/3. Simplify कर लो. So this value comes out as what? In denominator this is 20 and this is 16 minus 15 and this is what? 12. This is 9 minus 8. Simplify करके देख लो. This is coming out as 1/20 is to 1/12. Do the cross multiplication. What is the answer that you will be getting? Your answer is going to be 12 is to 20 and then 3 is to 5. क्या ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है? अब आप अपने आप से पूछो, मेरे से तो पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को पता था कि प्रॉब्लम सिंपल है। आप अपने आप से पूछो कि क्या आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसमें ये लगा पाओगे। मैंने क्या बोला, आप या तो जिंक पे फोकस कर दो या तो आप कॉपर पे फोकस कर दो। सो in the first variety, what did I do? I focused on zinc. Now let me focus on the copper to simplify this problem, just to make my point out here. How do I do that? We have alloy 1 and alloy 2. In alloy 1, the copper is how much? It is 1/3, right? And in alloy 2, it is going to be how much? 1/5. How am I getting 1/3 and 1/5? You understand this. Now over here, this is going to be nothing but 1/4. And if you apply the mixture alligation method, would you be getting the same answer? Obviously, you should be getting the same answer. This is how much? This is 1/4 minus 1/5. What did I say? आपको बड़े में से छोटे को घटाना है, आपको कंपेयर करना आता है, आप ये करके दिखा दोगे. Now this is going to be how much? 1/3 minus 1/4. Please simplify this on your own. See, are you getting the same answer? So this one is coming out as 20. This is 5 minus 4 and this is 12. This is 4 minus 3. 1/20 is to 1/12. ये वाली कहानी तक तो हम वहां पे भी आए हुए थे. So what does that mean? I am getting the same ratio. What is this ratio? 3:5. My job is simplified. Does this make sense to you? Now, if you understand as to how to deal with these two varieties of problems, your life is going to be way simpler. अब identify करो यहाँ पे two vessels A and B contain milk and water in this ratio. The ratio in which these two should be mixed, this is variety 2. अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपसे और करा रहा है. वो क्या करा रहा है? The ratio in which these two mixtures be mixed to get a new mixture containing this % of milk. अब ये यहां पे आपकी जॉब को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर रहा है. यानी मिल्क बोला क्या जा रहा है? मिल्क इज 69 3/13%. अब इस परसेंटेज को व्हाट इज दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू रेशियो. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 69 into 13 plus 3 upon 13%. Isn't it?
If you simplify this is going to be what? 690 plus this is going to be what? 207. This is 79. So 897 plus 3, this is 900 upon 13. Percentage is written as 1/100. देखो ना, थोड़ी मेहनत करवाया जा रहा है हमारे से प्रॉब्लम पे. तो या तो ये सिंपल रेशियो बोल देता कि 9/13 या 9:2. प्रॉब्लम में क्या बोलता? टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग, अगर प्रॉब्लम ऐसा बोलता a new mixture containing milk and water in the ratio of 9:4, जैसा कि ये पिछला वाला प्रॉब्लम था. अगर ये बोल देता तो ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है. 9:4 बोल देता तो कहानी आसान हो जाती, यही है ना. बट अगर यहां पे ये बोल दिया कि द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज दिस मच, आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवा ली गई. और अगर आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवा भी ली गई तो भी तो आपको प्रॉब्लम बन जाएगा आपसे. नाउ व्हाट इज दैट यू शुड बी डूइंग? अप्लाई the alligation method here. So this one is vessel A and vessel B. So I'm gonna be focusing on milk in vessel A. Milk कितना vessel A में? 8/8 plus 5, 13. How much is going to be milk in vessel B? 5/7. Did you understand this? 8 plus 5 and 5 plus 2, and milk out here is how much? 9:13. Now which ratio is bigger? Now you know how to figure it out. So this is 5/7 minus 9/13, and this one is going to be 9/13 minus 8/13. आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लो अपने हिसाब से. आपका आंसर यहां तक आने के बाद तो फिर आपका आंसर आ ही गया ना भाई. सिंप्लीफाई करने की जरूरत ज्यादा होनी नहीं चाहिए. दिस इज 7 into 13. So this is 65, this is 56, and this is 13. 9 minus 8. तो ये जो आंसर बन के आया वो कितना बन के आया? 9. 7:13. 7 into 13, and this is 1/13. So 13 and 13 are gone, and if it is gone, what is that you are having? 9/7 is to 1, and if you multiply both of these two with 7 or you do the cross multiplication, your ratio is coming out as 9:7. So in what ratio you should be mixing them? You should be mixing them in this ratio, 9:7. Did I make a mistake? क्योंकि 9:7 तो यहाँ पे कोई आंसर है नहीं है ना? So let me check it. 8:13. So this is going to be how much? 13. This is where I made a mistake. You must have understood this. This one is 7 into 13. So this is 63, right? And this is 1/13. So this would be 2. 7 into 13, 1/13. So 13 gone. And then what do we have? 2:7. This ratio comes out as 2:7. Do I have this as an answer? Yes, this is the answer. So method was correct. बट आई मेड अ वेरी स्मॉल मिस्टेक. और यही स्मॉल मिस्टेक अगर मैं एग्जाम में करके आएगा तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. आंसर वहां पे, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन में से कोई तो नहीं बना तो मेरे को ये घंटी बज गई कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया. नाउ कैन यू फोकस ऑन वाटर ऑल्सो to get the same answer? Yes, you can do that. Please do this on your own, and if you're getting the same answer, go in the comment box and let me know that you're getting this right. I'm going to be the happiest if you get this method. Now let us solve the next problem out here. And previous वाले क्वेश्चन को आपको वो उस मेथड से सिंप्लीफाई करना है. Two vessels A and B containing spirit and water, find the ratio in which these two mixture. So what is the variety? Second variety, right? अब इस प्रॉब्लम को और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अब कुछ कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है. मैं तो सीधे लिखूंगा वेसल A एंड वेसल B, राइट? और स्पिरिट पे फोकस करता हूं मैं. वेसल A में स्पिरिट कितना? 5/7. एंड over here this is going to be what? 7/13. Find the ratio in which, so that spirit and water are in the ratio of 8:5. What is the meaning of writing 8:5? In the mixture it is going to be nothing but 8:13. Can we simplify this? Yes, we can simplify this. So this is going to be, sorry, just a second. Can you simplify this? 8
by 13 minus 7 by 13, and this is going to be how much? 5 by 7 minus 8 by 13. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना निकल जाएगा? पहले वाला कितना आएगा? 1 by 13 is 2. This one is 7 into 13. So this is 65 and 56. अच्छा, ये कैलकुलेशन यहाँ पे थी. So this one is coming out as 9, 7 and 13. So 13 and 13 gone. And this one comes out as 7:9. 7:9 आंसर है. क्या ये प्रॉब्लम सिंपल है? Yes, it is simple. क्या अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड कर लोगे? जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लोग 5 मिनट में लगाएंगे, क्या आप उसको 1 से 1.5 मिनट में लगा लोगे? बिल्कुल लगा लोगे, बट अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए. अच्छा जी, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मास्टर कर लिया. एक जो नेक्स्ट वैरायटी बचती है ना, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, वो क्या करेगा? एक देयर इज अ कैस्क फुल ऑफ मिल्क, उसमें से कुछ मिल्क निकालेगा, पानी डालेगा, फिर देन वापस से मिक्सचर निकालेगा, फिर पानी डालेगा, फिर वापस से निकालेगा, फिर पानी डालेगा. दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आप किसी भी एग्जामिनेशन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया हुआ है. तो हाउ टू डील विद दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू बी माय एजेंडा इन द नेक्स्ट वीडियो. से मिक्सचर एंड एलिगेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप इसको, मैं चाहता तो 2-3 वीडियो में खत्म कर सकता था, बट मेरा खुद का अंदर से ना जो होता है कॉन्शियसनेस, वो नहीं अलाउ कर रहा था. वो मेरे को लगा कि स्टूडेंट्स, इफ दे आर वाचिंग दिस वीडियो सीरीज बाय सीरीज, आफ्टर वाचिंग द एंटायर सीरीज दे शुड बी एबल टू सॉल्व किसी भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन लगा ले वो. दैट इज माय पर्पस, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव. सो आई एम गोइंग टू बी वाचिंग इन दिस वीडियो नंबर 5 ऑफ दिस सीरीज. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.